Hey guys, welcome to our yet another video of those maple dreams. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe and like our video. Um, Today we are going to talk about a very important topic for all the immigrants who are intending or dreaming or already in the process of immigrating to Canada. कि इधर जॉब कैसे ढूंढे? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं. बेसिकली आप जब इधर आ रहे हैं तो you are probably already working somewhere in India for one of the companies, I assume. तो first and the most appropriate option is अगर आपका जो current employer in India है, that employer is ready to help you or assist you immigrate to here to Canada और आपका job वहीं पे transfer हो जाए. That is probably the best option. There are few companies who can do it. Many companies wouldn't be able to do it because cost budget हमेशा एक constant रहता है, and besides that HR policies रहते हैं, company policies रहते हैं, and companies cannot go against their policies. तो बचता है बाकी दो options हमारे पास. एक option है कि अगर आप um, उधर इधर आने से पहले, लैंडिंग से पहले ही अगर आपके हाथ में एक जॉब हो, कैनेडियन जॉब हो, which again a very good ऑप्शन. तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी लकी बिकॉज अभी आपको मालूम है कि ऑलरेडी रिसेशन पीरियड चल रहा है और कनाडा में जॉब मार्केट बहुत बढ़िया नहीं है अभी. तो वो ऑप्शन भी थोड़ा डाइसी रहता है, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू गेट दैट जॉब बिफोर लैंडिंग इन कनाडा, आई थिंक दैट इज गेट अनदर ग्रेट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन आता है फॉर पर्सन लाइक मी एंड मेनी अदर्स, मेरे ख्याल से, जहाँ पे कि आप इधर आ रहे हैं और आपके पास जॉब नहीं है. सो यू हैव टू रिजाइन एट योर करंट जॉब इन इंडिया एंड देन मूव टू कनाडा. तो व्हेन यू डू दैट, आपको अराउंड, समझ लीजिए कि आपको अराउंड 2 to 3 months एट बेस्ट आपको समझ के ये चलना है कि यू विल बी लिविंग हियर विदाउट एनी जॉब एट योर एट द एक्सपेंस ऑफ योर सेविंग्स. तो इधर आने के बाद आपको जॉब ढूंढना चालू करना पड़ेगा. सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन. और लेट मी टेल यू कि यही ऑप्शन मेरे लिए वर्कआउट हुआ है. आई came here, we landed here, I started looking for jobs everywhere, and fortunately within 2 months I was able to get one. कभी कभी फॉर जितने लोगों से मैंने बात किया है, समटाइम्स इट डजंट वर्क आउट. People stay here for about 5 to 6 months before they get into a job, they find a job. तो आपको जब यहाँ आप आ रहे हैं तो आप इस हिसाब से प्लान करके आना पड़ेगा कि एज्यूम कि आपको 4 to 5 months यू हैव टू रन विदाउट a job. तो we will make a separate video about the budgeting part and planning part. तो वो एक different video रहेगा. It's a huge one. काफ़ी delicate matter है. So let's jump over to how do we find a job. तो आप इधर कनाडा आ चुके हैं, आपको कैसे जॉब पाना है इधर for an employer. When that is the option, आपको around 3 months, I would say roughly 3 months before landing in Canada, आपको preparation already start कर देनी है. In the sense that you have to start into LinkedIn. Okay, become very active in LinkedIn. I would strongly recommend कि आप एक प्रीमियम LinkedIn प्रीमियम ले लीजिए. You take that is very helpful because that way you are able to connect with the employer, the hiring managers right away. Okay, तो आप डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट यू कैन ड्रॉप देयर शेयर योर रेज्यूमे एंड कवर लेटर फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट you think are best suited for you. Okay, so let's assume that you have taken a LinkedIn premium account now, or this is the very important part for most of us. Okay, we have our egos very high. सेम वाज द केस विथ मी. जब मैंने सोचा कि था कि यार मैं सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट क्यों भेजूँ, देन यू सेंड द कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड देन पीपल ऑन द अदर साइड दे टर्न इट डाउन और दे डोंट एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट फॉर एनी रीजन, एंड पीपल डू दैट, एंड somehow that will take a toll on your ego. But I would say that if you are planning to come here, find a job in Canada, live peacefully, then you will have to
समवेयर क्वेंच योर ईगोज, उसको दबाइए और आगे बढ़िए और आप कनेक्शंस बनाते जाइए। आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप सोचिए कि आपका कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। इज इट लाइक इफ यू आर इनटू आईटी, देन व्हिच फील्ड ऑफ आईटी, व्हाट इज योर डोमेन, व्हाट आर द कंपनीज दैट वर्क अलाइंस टू योर डोमेन, कहाँ पे आप ज़्यादा आपका स्किल्स मैच करता है, तो उस डोमेन को पकड़िए, वो कंपनीज को पकड़िए और उधर जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उनको उनके साथ कनेक्शंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत बार ऐसा होगा, probably in the beginning around 50 to 60% of the times whenever you send out a connection request, there will be other hiring managers or other people at high levels who will turn it down, or they will just ignore it. They will not accept your connection because you just forget about it and move ahead. और आप अपना जो नेटवर्क है लिंक्डइन में बढ़ाते जाइए। Networking in LinkedIn is the key to finding a better job, but LinkedIn is not doesn't guarantee you finding a job. There are many other uh, what do we say, job sites which can also help you find a job, like Indeed is another one. लेकिन LinkedIn Premium से क्या होता है, आपका आप उसका बहुत फ़ायदा रहता है। इट हेल्प्स यू टू मार्केट योर रेज्यूमे, बिल्ड योर प्रोफाइल, वेरी वेरी गुड प्रोफाइल, सो इट्स गुड। नेक्स्ट है आपका रेज्यूमे। दिस इज वेरी ट्रिकी वन because whenever you look into any of the YouTube videos, not just ours, everyone would say that create a Canadian resume. Everyone will speak about Canadian resume. The important part is what is exactly a Canadian resume, and that was a problem that I was facing in the beginning. I had no idea what a Canadian resume was. So let me make it very clear. A Canadian resume is just a simple resume, टू पेज और रेज्यूमे ऑन एन एवरेज, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स कुछ भी नहीं रहता, आपका फोटोग्राफ नहीं रहता। एक्चुअली इनफैक्ट मैंने लिस्ट बना दिया इधर यहाँ पे, जहाँ पे भी कि मैंने ये सब लिस्ट आउट कर दिया ताकि आई डोंट फॉरगेट टू मेंशन एनी स्पेसिफिक पॉइंट। एवरी सिंगल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो है आपका फोटोग्राफ। मोस्ट ऑफ द इंडियन रेज्यूमेज में ये होता है कि मैंने जितना भी इंटरव्यूज लिया है वो लोग अपना रेज्यूमे में फ़ोटो डाल देते हैं। डोंट डू दैट, ओके। आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेंशन नहीं करना है। और फिर आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड मेंशन नहीं करना, आपका हॉबीज़ ये सब मेंशन मत करिए। आपका व्हाट यू शुड हैव इन योर कैनेडियन रिज्यूमे इज आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका नेम ऑफ कोर्स, followed by your career objectives, and उसके बाद आपका resume should be about 2 pages on an average. Then whenever you are applying for a job, make sure that you have a cover letter. Most of the companies like a cover letter. There are still a few companies who don't care about the cover letters, but if you provide a cover letter, it just shows how dedicated you are, how committed you are to finding that job. ओके, सो दैट डेडिकेशन जो है वो कवर लेटर और एक वेल बिल्ट टेलर्ड कस्टम टेलर्ड रेज्यूमे से आता है। तो दोज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। देन when I was searching for a job, I came across this very important tool, and this is not a sponsored video. It's just that it benefited me a lot, so I am just mentioning about it. It was the job scan. तो क्रोम ब्राउज़र में एक जॉब स्कैन का एक एक्सटेंशन आता है, इंस्टॉल इट, एंड व्हेनेवर यू ओपन एनी जॉब डिस्क्रिप्शन इन क्रोम, वो जॉब स्कैन आपको बता देगा कि आपका करंट रेज्यूमे जो है वो कितना परसेंट मैच करता है। द मैचिंग परसेंटेज बता देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन apply for that job, or you can decide to go ahead and tailor your resume accordingly. कुछ keywords उठाइए वो description, job description से, और आपके resume में डालते जाइए। So that will improve your matching percentage। यहाँ पे बहुत ठंड है तो थोड़ा थोड़ा शिवरिंग है, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड। आई थिंक अभी 8 डिग्रीज या समथिंग अराउंड दैट अभी है यहाँ पे, और मैंने जस्ट एक सिंपल सा जैकेट पहना हुआ है तो मेरे को ज़्यादा ठंड लग रही है। तो एनीवे, लेट्स मूव अहेड। आपका रेज्यूमे जो है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए, इन द सेंस है आजकल ATS हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। whenever
a job opening comes up in LinkedIn or Indeed anywhere, the hiring managers उनके पास बहुत thousands and thousands of job applications आते हैं. I'll give you an example. LinkedIn में एक job open हुआ. Within 5 minutes of posting the job, there were about 115 applicants for the specific job. तो सोचिए एक दिन में कितना होगा, 2 दिन में कितना हो जाएगा. तो हायरिंग मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हर एक रेज्यूमे को ओपन करें और चेक करें ये मैचिंग है कि नहीं है. सो दे मेक यूज ऑफ द ATS. ATS एक टूल है which will filter out the resumes based upon the most matching resumes. Those are the only ones that will make it to the hiring managers table. What is the matching percentage? On an average, anything above 80 is good, above 90 is great, above 98 95 is ideal. So anything below 80%, I would say either you tailor your resume, कुछ keywords डाल के मैचिंग परसेंटेज बढ़ाइए, या फिर डोंट अप्लाई फॉर दैट जॉब, क्योंकि आपको कॉल्स नहीं आने वाले अदरवाइज. ओके, ऑलराइट. तो आप जब ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट थिंग इज इट हैज टू बी ए कैनेडियन फॉर्मेट रेज्यूमे, व्हिच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. सेकंड थिंग इज उसमें रेज्यूमे में आपको बहुत ज़्यादा जैजी ऑर्केस्ट्रेशन, वो ब्यूटीफुल, ये कलर वो कलर डाल दिया, रेड ब्लू हरा रंग, ये सब नहीं करना है. यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल. ओके, इनफैक्ट जो कॉलम्स रहते हैं वो भी कॉलम्स मत बनाइए, ये कॉलम वो कॉलम, टेबुलेशन ये सब कुछ भी मत करिए. सिंपल सा रेज्यूमे बनाइए. आपका नाम रहेगा, करियर ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, कुछ बोल्ड रहेंगे जो हेडिंग्स हैं और बाकी सारे स्मॉल्स में रहेंगे. एक सिंगल फॉन्ट यूज करिए विच इज मोस्ट कॉमन वन. ओके, बहुत ज़्यादा इटैलिक्स ये सब यूज मत करिए, सिंपल सा रखिए. और जब भी आप अपने टेक्निकल स्किल सेट्स डाल रहे हैं, मेक श्योर दैट दोज टेक्निकल स्किल सेट्स आर पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन. जब कि लेट्स से आई वर्क फॉर एन XYZ कंपनी, तो XYZ कंपनी में मैंने क्या क्या किया है वो आप जब बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, तो मेक श्योर दैट वो टेक्निकल स्किल्स उसी बुलेट पॉइंट्स में आपके रहेंगे. ओके, और वो मेंशन रहेगा जैसे कि आपने AWS या Azure पे काम किया, या फिर लेट्स से PostgreSQL में काम किया, या फिर क्लाउड पे आपने डॉकर पे काम किया, या किसी भी चीज़ पे कुबरनेटिस पे काम किया. तो मेक श्योर कि वो स्किल सेट्स आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में ही रहेंगे, आपके अचीवमेंट्स में रहेंगे. और जब आप एक कंपनी के अंडर में आपने क्या क्या काम किया, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेक श्योर that वो roles and responsibilities shouldn't be like a job description. It should look more like an achievement. कि this is what you have achieved. Okay, and don't use too many repetitions of words. थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए. बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स भी मत डालिए, जैसे 8 to 10 बुलेट पॉइंट्स नहीं. जस्ट कीप इट on an average like 4 to 5 bullet points, or listing out your skill sets, your achievements, what you have achieved during this tenure, those things. Okay, keep it simple. एक चीज़ आप कर सकते हैं कि वट एवर यू आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इन योर रेज्यूमे, उसको हाईलाइट करिए सो दैट इट डायरेक्टली कैचेस द आई ऑफ द हायरिंग मैनेजर और एनी पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दैट. ओके, नेक्स्ट है, हियर्स द बैड न्यूज़. ओके, अभी कनाडा में जो जॉब मार्केट है, दैट इज़ नॉट वेरी गुड. ओके, आई हैव फेस्ड इट. आई वाज लाइक मैंने to be very frank, I have applied to around 400 to 500 companies jobs, and उसमें से मेरे कुछ बस 3 calls आए थे for interview. I could actually appear for the interview just for 3 opportunities. उसमें से 2 में reject हो गया. HRs actually ghosted on me. I don't know the reason could be anything like the opportunity closed, they hired someone internally, or probably they found a better candidate for me. So anything could have happened. The third interview, that was the only company which said yes to me. So rejections बहुत ज़्यादा आते हैं. Most of rejections will come right at the early stage when you get an email from the HR saying that they found some other candidate. Unfortunately, your job did not match the requirements. आपके resume did not make it to the hiring manager table, or they found a better candidate. All those things, so that can happen. Don't get depressed. It is a normal thing. Just move ahead,
start applying. इसमें कुछ tricks हैं. How do you apply? Any company, any job posting that comes, if you are able to apply to that job within 5 to 10 minutes, आपका chances बहुत bright है. If you are like applying 1 or 2 days later, आपके chances बहुत बहुत dull हो जाएंगे. So always keep an eye on new job opportunities, create alerts in LinkedIn, and as soon as the job comes, within 5 minutes try to apply it. It's a very tough task to keep track of all of those postings and respond to them immediately, but you have to do that because other applicants are doing it, and you are not just the only one who is facing this trouble. Everyone is facing it, everyone is doing it, so you have to do it if you want to land into a good job. Okay, next is ये एक ट्रिक है कि सैटरडेज एंड संडेज को अप्लाई मत करिए. तो अर्ली मंडे मॉर्निंग्स को अप्लाई करिए. एवरीडे मॉर्निंग अप्लाइड. जो सैटरडे और संडे को जॉब पोस्टिंग आए हैं, अप्लाई फॉर दोज जॉब्स ऑन मंडे मॉर्निंग्स, बिकॉज वीकेंड्स में कोई नहीं देखता आपके जॉब्स, आपके एप्लीकेशंस. और when on Monday morning, when the hiring manager or the HR comes and they take a look, आपका resume बहुत नीचे रहेगा. तो it's better to apply early Monday mornings, so that increases your chances of getting observed. ठीक है, and shortlisted. Next is, because अभी job market खराब है, chances are that most of the companies will reject your application, and the best chance you have is with the consultancies. जो consultancies है, they basically work as an interface between you and the employer. तो वो लोग आपका resume लेके forward करते हैं. तो once you catch hold of these kind of consultancies, you apply to them and they will forward your resume to the employer. तो उससे आपका chances बढ़ जाता है. So try to identify those consultancies. I will make a separate videos on these consultancies. List out around 8 to 10 consultancies for you. That will be very helpful. Lekin that's what it is. Applying to consultancies has actually helped me. All right. Yeah. And last thing I would say is, I think video already थोड़ा लंबा हो रहा है, but this is an important point I would like to make is, आप when you are doing a job hunt, आप खाली resume बना रहे हैं, cover letter बना रहे हैं, apply कर रहे हैं, बस इसी तक सीमित मत रहिए. डोंट लिमिट योर सेल्फ. इनफैक्ट गो बियॉन्ड दैट, वर्क ऑन योर स्किल्स एज वेल. आपके फील्ड में जो भी स्किल सेट्स हैं, कीप वर्किंग ऑन दो स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स, ताकि यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, एंड दैट विल greatly increase your chances of getting an interview call. Yeah, I think that is everything I have. So दोस्तों, if you liked this video, if you think कि ये video आपको helpful रहा है, कोई किसी तरह से भी, it has given you some extra information, it has helped you in finding a job or taking a first step towards that, so please like this video and subscribe it, share it. So thank you very much, and see you later. Bye bye.